I got a Daisy feeling. I got a Daisy feeling. Yeah. Hello, everybody. I'm Jaby KOAY, joined by ACHARA KIRK. Yo, what's up? Too much energy. Extra today. Jeez, all right. So we're looking at a SLAYY Point video, when parents allow for Goa trip. Thanks so much for joining us. Make sure to hit that subscribe button, bell icon, all notifications. Pretty please vote this sucker up. Let YouTube know you're enjoying what you're watching. While you're subscribing and upvoting, subscribe to SLAYY Point. There's a link in the description below if you want to click on that link, give the original video an upvote, subscribe to them from there. Okay, here we go. फूल पत्तियों वाला शर्ट, बहुत सारे फूल पत्तियों वाला शर्ट. इसमें फूल पत्तियां नहीं थी तो मैंने खुद से चिपका दी. सिलेक्टेड. इसके बिना कहाँ क्यूट लगूं? यार मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं मिल रहा है. अरे घर के चड्डी में चले जाएंगे. क्या स्विमिंग कॉस्ट्यूम? गोवा में कौन से बीच जाते? लवर्स बीच. What? यहाँ तो बिल्कुल नहीं जा. यार गूगल भी मेरी ले रहा है. पापा मैं गोवा जा रहा हूँ. इवेंट. आपको पता है ना, मेरे जैसा संस्कारी लड़का खुद से क्यों जाएगा गोवा घूमने? काम से जा रहा हूँ. उन्होंने टिकट्स भी भेजी है. बुक करने के लिए डिटेल्स तो तुमने ही भेजी ना, बिना पूछे. फ्लाइट का टाइम हो. जैसे जैसे गोवा पहुँचते जाएंगे ये चेन और नीचे होते जाएगी. गोवा जाने के लिए सनग्लासेस लाना भूल गई. अब मैं धूप में क्या करूँगी? हाँ यार, ये तो मौत की सिचुएशन है. I love the subtitles. AOT? Oh, Attack on Titan. Oh, gotcha. भाई बैग तो पकड़. बैग वॉलेट भी तो उतारने पड़ेंगे. वो भी हाथ में देगा. पूरी सिनेमैटिक फील खराब कर रहा है यार. सॉक्स भी. ये देख लीजिए तेरी टांगे. अरे भाई ऐसे कर रही हूँ. बीच एंजॉय. अब कोई अच्छा पोज दे. Why would you do that? It does look like he's about to take a dump in the ocean. A lot of people do that. फ्रिज वेज के अंदर छुपाने की जरूरत ही क्या? Oh my God. What? Kirk. What? When I was in Spain. Oh, someone took a dump in the ocean? It's the best place to do it. Yeah, like I was chilling on the beach with my friend, and I looked to my right, and I saw this guy just like totally waddle up to the beach. And just pull his pants down, and there was like a mom with her kid right there, and like the kid was getting close to the guy, and the mom, I'm like, why isn't the mom pulling this kid away? Dude just pulled down his pants and just started taking a crap right in the ocean right there. He didn't even have the decency to like swim out a bit of a distance and just leave a trail of poop behind him. Well, the thing is, he was homeless. If he went into the ocean, all of his clothes would have gotten wet or something. Okay, fair. I guess. I don't know, man. Did he at least like, I don't know, dig a hole, cover it up? Oh no, come on, have some common decency. At least cover up your poop. Yeah. Cats do it. काजू बादाम यार अलग कर लो. हम बेचारे संस्कारी लोग. लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? ओ दीदी ने सारी ट्यूबलाइट टांग ली. हो जाएगा तो बता दे. रेडी भाई. गोवा की Subtitles are फील. so fast sometimes. ऐसी होती है गोवा की फील. दिख रहा है मेरा पैर. Oh God. यार कुछ सही नहीं जा रहा. भाई इसमें से उतरते कैसे? खुद को कैसे झुलाते हैं? महिलाओं का दिमाग पुरुषों की अपेक्षा में औसतन 10% छोटा होता है. What? Move, female dog. ये अपना मानसिक और झूले का संतुलन दोनों खो चुका है. There is no dignity in getting in or out of a hammock. It's not cute. नहीं तो काम मदद करने. ये झूलते मैंने आज तक किसी को ऐप वर्कआउट करते नहीं देखा. इस पे पीछे खींचते हैं, इस पे लात मार के झुलाते. जस्ट पनीर रोल खा के आया हूँ. Oh no. यहाँ झुला दिया. नो स्विम जोन. पर किसी को पड़ी नहीं है. लाइफ गार्ड भी बोल रहे हैं मरो फिर सालो. Did you see that stuff in Hawaii where like the lifeguards told people get out of the water, like leave the beach, and they just stayed, and then like a massive wave came and then everybody was freaking out, and then this was passed around on social media and people are just like, serves you right. But like, you know, kids were nearly swept away into the ocean. Good. So listen to the lifeguards. We're you guys. overpopulated as it is. It's fine. यहाँ I'm सिर्फ just kidding. फॉरेनर्स है. मतलब हमें आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है. Wow, that guy's घूम hair. रहे हैं. सबसे ज्यादा कपड़े हमने ही पहने इस बीच पे. सुबह सुबह बीच पे आ गए और भाई पूरा खाली. इतने सुबह जुहू बीच में साइड में देखो ना, 4 लोग हगते हुए दिखाई देते हैं और वही पानी घूम के उनके पिछवाड़ा वाला हमारे पैरों पे लगता है. और इस पूरे बीच पे एक टुकड़ा नहीं किसी कचरे. खुद को भूल गए क्या? Oh, I had a feeling that joke was gonna come. That's too easy. YouTube से तो ज्यादा ही बेटर धंधा लग रहा है ये. नहीं छुएगा तो मुझे नहीं छुएगा. I
इतना गंदा दिल जो बना है उनका प्यार तो नहीं टिक रहा भाई। भाई लोग यहाँ सैंड में कुछ भी लिख देते हैं जो बाद में मिट जाता है या लोग आके खराब कर देते हैं, पर मैंने ऐसी चीज लिखी है जो कोई नहीं मिटाएगा। जो मिटाया उसकी शक्ल गंदी। ए अबे तू ही निकल गई गंदी शक्ल की। मैं नहीं तो कौन बे? अबे उधर ये डिप्रेस्ड महिला अब जिंदगी में हार मान चुकी है। अब हम करेंगे जेट स्की। Oh, fun. ये क्या हो रहा है? अलविदा अलविदा अब चैनल है मेरा। तेरी शक्ल गंदी I feel bad for her. Oh no. 2 minutes and 44 minutes. Why does the guy have to ride with him? It's for safety. And also so they don't steal the jet ski maybe. I don't know. नशे करता हूँ भाई ऑब्वियसली। हे भगवान भाई ये पैराशूट का हाल देखो, मरा हुआ है पैराशूट। अरे ट्रायल बॉल भी नहीं डली उसमें अभी। Uh-oh. Have you ever done that? Uh-oh. डर मत यार। Oh, he's gonna. Yeah, parasailing. चिल्लने लग रहा, बचाएंगे। Okay. Silly. The famous head wobble. That's safe. Yeah. मत दिख जाना। बस Wow. Yeah. मजा आ रहा है गाइस, बिल्कुल डरने लगा। बहुत मजा आ रहा है। I would have dropped the camera. मछली जैसे। Oh, okay. It's like, okay, that's good. Someone has to fly with you सच on में that? गाइस मजा तो बहुत आया और इस ट्रिप के सारे Why are you afraid of people flying? I'm not. with you? I just want to go by myself. I just personally would rather not have to deal with someone kicking me in the back by accident or riding on my ass while I'm jumping out of an airplane. I don't want to feel their boner on my spine. It's just not interesting. Or on my butt. No, thank you. Go away. थक हार के फिर फेस मसाज करवाया, बहुत प्यारी। Oh, what? Oh. Oh, there really was an event. Oh yeah. Think of, what is strobe warning or whatever it's called. पर हमें फाइनली मिल ही गया अवार्ड एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। थैंक यू। Yay! Oh, congrats! अब Well एक done, घंटे you का guys. इवेंट पूरा हो गया। Oh, अब उसके परमिशन पे nice 4 दिन घूमे। outfits. Nice. I liked Gatomi's little. और पहली बार मैंने jumpsuit सोचा अपनी situation. गर्लफ्रेंड को भी व्लॉग में ले लूं, डिक्की में बिठा देते हैं। और गोवा का टूरिज्म बहुत बूमिंग है गाइस, सारी गायें भी यहीं आती है घूमने। गोवन खाना ट्राई करना था पर ये वेटर को बोल ही नहीं पाए। टीना लव आशीष। Some people just want to watch the world burn. ना मिला तो किसी I wonder को if ना Indians मिल watch this with पाएगा। subtitles just to catch the extra jokes. भाई कोई do you Like think? it. I don't हो रही know. है। It was You at know, this you know. moment that he knew he fucked up. इसने अभी जो किया है ना, जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने वहाँ से देख लिया इसकी हरकतें और बहुत गंदे लुक दे रहे हैं। भाई मुझे लगा कुछ 2-3 घंटे पुराना है, या अभी जस्ट न्यू बना के गए हैं। और तूने 1 सेकंड में खराब कर दिया यार उनका प्यार। What a jerk. अरे इनका एक और खराब हो रहा है पीछे। अरे भाई एक है आपका, एक है वो अंकल ने ऐसा लुक दिया है, मैं ये छोड़ दे रहा हूँ। अब पैरासेलिंग तो मैं कर चुका हूँ, तो मैं बस जा रहा हूँ गेमर फ्लीट को डराने। भाई रस्सी Gamer fleet? Oh, what? पैराशूट नहीं भूला तो मैं अच्छा नहीं बोल सकता क्या? पैराशूट तो खुला ही होता है ना। अबे हमें लगा हमें से बैठना है। थोड़ा ऐसा आ जाओ। जाओ। यार अरे फिसला। नहीं मैं जा रहा हूँ। अभी तो भाई को बोलने वापस ले जाए। उसको उस तरफ डाल दो। भाई इसकी क्वालिटी देख लो, सिलाई विलाई खुल रही है। यार तुम डराओ मत यार, ऐसा नहीं करो। Oh, he's such a sweetie. प्रॉब्लम हुई तो भाई देखिए ना वो वीडियो, जो रस्सी खुल जाती है फिर वो उड़ता चला जाता है। Oh no. भाई ये सब क्या डरा रहे हो भाई? Oh, फैंस so को बाय बोलना है। mean. भाई अरे भाई साहब, मेरे से ज्यादा एस्थेटिक ये भैया लग रहे हैं, ऐसे ले कि मैं सूरज को खा रहा हूँ।
खा तो बिल्कुल भी नहीं रहा, भूखा मर रहा है तू। नाइस व्यू। तो गाइस मैं अभी जस्ट रूम में आया और ये हैप्पी एनिवर्सरी का क्या मतलब? की एनिवर्सरी भाई, ये रोस्ट कर रहे हैं क्या? तो मीठा खाते खुशी के अवसरों पर मैं रोते रोते खाऊंगा एक केक। मुझे लग रहा है वहाँ जो आशीष और टीना का मैंने दिल तोड़ा है ना, उनका दिन ही खराब है, क्योंकि उनका एनिवर्सरी केक भी मेरे रूम में आ गया। सॉरी आशीष भाई और टीना दीदी बहन मैम, मैंने ये काट दिया पहले, पर हैप्पी भी तो हो ही नहीं अभी तो। टेस्टी तो है, पर आज सुबह रूम में पैर धोने और भाई ने ऊपर का शावर ऑन कर दिया। Oh no! और यहाँ से व्यू देखो गाइस, थोड़ा ऊपर ले, ये व्यू नहीं, ये व्यू, बीच व्यू, कितना यूनिक। तो मैंने मंगाया है एक गोवन डेजर्ट सेराडूरा। अबे ये गोवन है ही नहीं, ओरियो है इसमें। कुछ मच्छी डेजर्ट खाओ, मच्छी गुलाब जामुन, लॉबस्टर। हाँ भैया, 1 ऑक्टोपस रबड़ी फॉर मी। वो आके भी बाहर के डेजर्ट खा रही है, इसने चट कर दिया। मैंने तो खाया नहीं बिल्कुल, लोकल खाता हूँ। नहीं खाया तूने? तो ये दोनों स्पून गंदे के यहाँ लाइन से पानी में कसीनो ही कसीनो। Oh, what they have boat casinos? तो अभी हम आए फोर्ट। You never heard of a boat casino? I didn't know they had them there. यहाँ पे आरओ ड्रिंकिंग वाटर लिखा है और ये बंदा उसे रो ड्रिंकिंग वाटर बोल रहा है। कह रहा है मुझे आंसू का पानी पिलाने वाले हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पढ़ाई किया करो गाइस। वो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी नहीं हम। Oh no, because RO, right? Reverse osmosis. I think that's what it stands for. But ro in Hindi means to cry. So this guy's going row water. So they're saying, oh, it's like what, made out of tears or something? Children's tears. Yes. हम ये आलसी वाला रास्ता ले लेंगे। बेसिकली यहाँ पे पानी रखते थे लोग, इतना बड़ा बॉटल है उनका। वो देखो, वो टैंक है भाई। अरे सूख चुका है, नीचे बस कचरा है। ये तब भी गोदरेज के ताले थे क्या? इधर? ये लड़का गधा है। हेलो हेलो, कोई है बे? कोई पुरानी आत्मा आ जाएगी, पीछे चिपट जाएगी। ये आत्मा इधर है। पोर्चुगीज No. हाँ, रोनाल्डो। कैदियों को अच्छा खाना देते थे भाई। देख फ्रूटी, ये वो लेस का पैकेट है, वो स्प्राइट का कैन है। भाई जेल में रखते थे, पार्टी होती थी। Why would you do that? बात कर रही है। adidas के थे उनके जेल के कपड़े। बड़ी उम्र में महिलाओं को होती है ये समस्याएं। कुछ बताना, कोई पोज। ये तेरा पोज है। भाई साहब, कहाँ जा रहा है? कौन से खोपचे में ले आए हो? भाई देखो, तब ओयो रूम नहीं थे, तब के राजा महाराजा अपनी बंदियों को यहाँ पे लाते थे। ये इन्फॉर्मेशन आपको और कोई गाइड नहीं बताएगा। फुल प्राइवेसी, हवा मस्त। यहाँ पे इमरान हाशमी का नहीं, तब नहीं होता। और अगर बंदी के साथ हो और सडनली वहाँ से दिख रहे मम्मी आ गई, फटाफट अपनी बंदी को इसमें बंद कर दो। This design is very human. पता ना महाराजा कौन से थे यहाँ पे? महाराजा क्रिस्टियानो दे रोनाल्डो। यहाँ पे ये दीवारों में छेद दिख रहा है। गुटके का पैकेट अच्छे से फोल्ड करके इसके अंदर घुसाया गया है। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इतनी देर में डस्टबिन नहीं। I don't understand why people do this shit. That's so irritating to me. Yeah. They're just polluting. Yeah, it's not nice. It just makes the whole place look really gross. Guaranteed it's not Japanese tourists. Oh no, absolutely not. पता तुम्हें? जिसने भी ये बनाया राजा ने, क्या उसको पता था एक दिन उसके दीवारों के बीच गुटखा के पैकेट फंसे होंगे? फूल पत्तियों वाला शर्ट मतलब गोवा। Yeah. और इसे देख के लग रहा है ये दिल्ली जा रहा था, गलती से गोवा आ गया है। ये पहनना था ये। अबे तूने भी तो ये नहीं पहना। पीछे देख, अगर ये मम्मी ने देख लिया तो भाई यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं दिख सकता, मैं यहाँ नहीं दिख सकता। भाई हर जगह लोग अपने कस्टमर Why? सेटिस्फैक्शन का दिखाते हैं, Not यहाँ पे इन्होंने संस्कारी। कस्टमर डिप्रेशन के फोटो डाले हुए हैं। लिटरली सड़ चुका है वो आदमी। जब कैमरामैन के एक हाथ में कैमरा और दूसरे में Because they're in गन। pain. आपके बोले डिजाइन वाला They're टैटू trying not to बिल्कुल ना cry. बनाओ, पर अब मिटा भी नहीं सकते। मैंने सोचा था गोवा आया हूँ, बीच जाऊंगा फॉरनर्स के साथ। यहाँ 1 घंटे से काजू के दुकान में खड़ा हूँ। गार्लिक का सबसे छोटा कौन सा आएगा? Oh my god. She is me, I am क्या? her. टेस्टिंग के नाम पे सारे फ्लेवर खा के देखते। अबे गोवा इसके लिए आते हैं। तू और मैं दारू नहीं पीते, हुक्का नहीं करते, ड्रग्स नहीं करते, तो काजू ही खाएंगे ना। 50 का छुट्टा नहीं है। नीचे वो चोमू कुछ लिखा है ना, ऐसा ही लग रहा है। Please, cow, do
something. Oh, nothing. Okay. कुछ नहीं था यार ये। और अब ये मुझे बीच लाई भी तो कब? कुछ दिख रहा है? एक लहर भी नहीं दिख रही। That was scary. Did you feel that? I felt that. What was it? This is a plane. Oh, was it playing? Yeah. Oh, weird. I don't know if you guys could hear it, but like it was like the floor was legit shaking for a second. I'm like, what is going on? There is no garage underneath this floor. I thought it was maybe an earthquake. I felt an earthquake the other day. It was fun. It was not an earthquake. Okay. Yeah. अलग-अलग गाने बज रहे हैं और हमें बस सुनाई दे रहा है उनका मैशअप। यहाँ बज रहा है जीने के 4 दिन, यहाँ बज रहा है ततड़ ततड़, यहाँ बज रहे हैं अंग्रेजी गाने। आप पे स्टार्ट करोगे बाराती डांस, यहाँ आते आते भाई सालसा करना पड़ जा रहा है। अरे चिकनी चमेली छुप के अकेले ऐसा कुछ है करना। आना ही नहीं चाहिए था इस बीच पे। No. Oh, God. YouTube का कॉपीराइट सिस्टम भी कंफ्यूज। Oh, wow. अभी जस्ट हम वापस आए और ये रखा हुआ था उल्टे सीधे लोग के लिए हमारी उल्टी सीधी फोटो। ताज के स्टाफ को बिग थैंक यू। अभी मैं एक खाने वाला हूँ, खुद का ही चेहरा काट के खाऊंगा। What? Wow. Oh, that's a legit cake. Oh, they made it out of like fondant or something. पूरा एक That's so घंटे का sweet. ड्राइव है। और वहाँ पे कुछ हो करने के लिए यार प्लीज। Don't ask, look and go. रूड है यार। मुझे लगा 1 घंटा ड्राइव कर लिया तो पहुँच जाएंगे। भाई अभी यहाँ पहुँच के भी इतना ऊपर तक ट्रैक करा रहे हैं। चलते गए अभी से पैर दुख गए। तू सांस ले ले पहले, लगता है अभी मरने वाली। ऑलरेडी इतना ऊपर चल के आए हैं, समुद्र से आधा पानी तो हमने पसीने में निकाल दिया है। राजा जिंदा भी रहता था इतना ऊपर जाने में, आधे सिपाही तो तुम्हारे रास्ते में ही मर जाए। फाइनली फोर्ट पहुंच चुके हैं। महाराजा वाली एंट्री है और अंदर कुछ नहीं, खाली है भाई। Oh gosh. फोर्ट किधर छुट्टी है? पे चला गया क्या? लंच टाइम है क्या फोर्ट का? अभी और चलना है क्या? ये फोर्ट है। मैं बोल रहा था कुछ अच्छा होना चाहिए। अच्छा बुरा छोड़ो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जैसे सेब का सिर्फ छिलका दे दिया हो और अंदर पूरा खाली। ये तो खाली बंजर जमीन है, ग्राउंड है बस। भाई मैं वहाँ पे रात भर सो जाऊँ ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ आता है, इतना बोरिंग है। इस फोर्ट को गोवा के टॉप साइट्स पे किसने डाला? काबुल का फोर्ट बचा भी है, उस पे सबने अपना ऑटोग्राफ मार दिया। यहाँ के राजा का नाम भेई। कल वाले फोर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन तो थी, कुछ हिस्ट्री थी। यहाँ तो एक बोर्ड नहीं है भाई। यहाँ के केयर टेकर्स को खुद नहीं पता यहाँ क्या था। तो बच्चा ही इतना कम है तो उन्हें भी कैसे पता चलेगा? शर्मा और ये MI रोहित शर्मा यहाँ आए थे जी यार। मुझे लगा था I think it's awful that people like, what do you call it, graffiti on this? What's that called? Yeah, what's they the word put for that? graffiti. They vandalize it. Yeah. That's so disappointing that people do that, especially for a site like that, you know? Yeah, well, actually, I just wanted to commend Slay Point for being able to turn a negative situation into great content. Because I kind of love when they do this stuff where they're like just complaining about, you know, how tired they are when they're going up there and then they see it and it's like, wow, that was anticlimactic. Yeah. ये सब क्या किया तूने? 2 बॉटल, 1 कैन। Oh, gross. पहले से एक्टिंग की बादशाह कसम से। डायपर ये भी तेरा है क्या? एक ही चीज देख के सब आते हैं कि यहाँ पे दिल चाहता है एक ज़माने में एक दीवार पे। वो दीवार कौन सी है वो किसी को नहीं पता। तूने देखी भी है? नहीं देखी है। जोर से बोल मत देना, देखो दीवार से फेंक देंगे यहाँ पे। मैं खुद ही कूद जाती हूँ। और यहाँ पे हमें मिला गोवा का सबसे यूनिक व्यू, पानी व्यू। दिल चाहता है मूवी के लिए 3 दोस्त चाहिए थे, हमारे पास अभी भी 1 कम है। इतने दोस्त मिलते कहाँ हैं लोगों को? मस्ती मेरा है डूबाडू। कौन सी मस्ती? दिल चाहता है मनहूस। Wait, so did they find the wall or not? I guess so. कीड़ा था क्या? इतना बोरिंग है, कीड़े भी नहीं आते यहाँ। चल कीड़ा था। यहाँ नीचे बोल रहे भैया फ्री है, 20 रुपए भी नहीं, यहाँ फ्री में जाओ। बोला वाह, अब पता चला उनको भी शर्म आ रही थी पैसे चार्ज करने में। अबे वो एग्जिट का गेट ही बंद कर दिया। लगता है उन्होंने सुन लिया हम क्या बकवास कर रहे थे। तो ये है पर्रा कोकोनट रोड। इस जगह की खासियत क्या है? यहाँ पे डियर जिंदगी शूट हुई थी। और क्या? और तो पता, मतलब रोड है। What's the comedian TPF show? Oh, yours truly or something? Yours something. ड्रेस कोड डिसेंट, इसीलिए खाली पड़ा है। यहाँ सब नंगे जो घूम रहे हैं। यहाँ लोग नॉर्मल। What does that mean? Dress code decent? That's so. Put on a shirt. That's just subject to interpretation, though. Like anyone, like your definition of decent could be different from mine. सब ब्लॉगर्स बीचेस पे दिन में जाते ताकि आपको अच्छे से व्यू दिखा सके। हम हर रोज रात को आ रहे हैं बीच। सुबह फोर्ट में
अब हम यहाँ एक ऐसे रेस्टोरेंट में आए हैं जो सबने बोला है भाई जाओ जाओ जाओ, पर पता नहीं क्यों। ग्रीक रेस्टोरेंट है तो ग्रीक खाना कैसा होता है देख। हाँ, खाना ही होगा यहाँ का स्पेशल, और क्या। ओके, खाना मनोरंजन के बाद मिलेगा शायद। अरे पक्का कबाब के लिए लाइए आग। खाना आया नहीं, पर गौतमी के मुंह से पानी क्यों आ रहा है इतना जल्दी? अंकल को लगा उनकी बेटी स्टेज पे बेटर नाचेगी, बट उन्होंने पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। खाने के लिए टेबल नहीं, आप और डांस देखो। ये पार्ट गौतमी ने रिकॉर्ड किया। मैं बाथरूम में था। अब भूख नहीं है इसको। और प्लेट लाए तो मैडम तोड़ क्यों रहे हो? किसी ने खाया भी नहीं। नहीं। अरे ये प्रैंक हो रहा है क्या हमारे साथ? भैया इधर। अरे I don't understand that. आरसीबी से बेकार फील्डिंग है। मैम इधर देखो भूखों को कैसे तड़पाया जा रहा है। खाना खाने के लिए लकी। So I used to work at a place called Macaroni Grill, and every single night that I worked, at least one dish was deliberately broken. Like you could hear it where they go, oh, and there's like some kind of celebration, and then they chuck it, and it would break it. I'm like, why? That's just a mess. You got to clean now, and then like someone could get hurt. I just think I go into mom mode for some reason. I'm just like, someone could get hurt. It's called culture, Jaby. It's part of their culture. Yeah. Let's see how culture you feel when you're just at the front of the stage and they throw one of those dishes down and a little piece of ceramic gets right in your eyeball. Oh, that nearly happened to me the other day. I was like trying to. ACHARA was celebrating in the kitchen. No, she went. She's like, I'm Greek today, bitches. That would have been much better than what actually happened, because I was trying to move so many mugs from the dishwasher. Do you see this? And then two fell down. Do you see this? ड्रॉ चल रहा है। And smash those plates. 1, 2, 3. तोड़ना क्यों है? Oh my. God, why would you do that? मेरे सर पे कौन तोड़? फिर बताया कि ये प्लेटें तोड़ना एक ग्रीक ट्रेडिशन है, और फाइनली उसके बाद मेन्यू दिया। बोलो किथो के फेफड़े, मेली नैनो सन्नाटा। अबे ये तो बैंगन का भरता है। छोड़ो भाई, रास्ते में मैगी ले लेंगे, छोड़ो। That's pretty. That's really pretty. आखिरी दिन है तो हमने सोचा कोई ऐसी जगह जाते हैं जो पूरी न्यू और अनएक्सप्लोर्ड हो। तो हम आ गए बीच। क्या यूनिक व्यू दिखा रहे गाइस आपको। पूरे ट्रिप तो आपने देखा ही नहीं है। ये पुशअप मारता हूँ। पुशअप कम और बेशरम रंग का डांस ज्यादा लग रहा है। बहुत ही तंग किया। मर गई भाई। ये तो होता है ना सैंड कैसल। ये लग नहीं रहा कैसल। ये रास्ता यहाँ से चल के आएंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर रियलाइज करेंगे कि अंदर कुछ खास है नहीं, और फिर वापस चले जाएंगे। ये मेरा पत्ता है, झंडा जो गिर रहा है। झंडे को भी पता है हार चुके हैं हम। पानी डाल के पक्का करेंगे। I want to see him actually try to build a castle and actually try to do some push-ups. Anyway, what were you saying about the dishes? Oh no, like the mugs just kind of crashed into each other, and then the ceramic small pieces broke. At first I was like, oh, I guess the mugs didn't break, but chips flew off and I felt one. I thought that maybe it got in my eye a little bit, and I was like, and I called this guy up, or you called me. You texted me. Yeah, I was like, oh my gosh, I nearly took out my eye with a couple of mugs, and you were not very interested. I was expecting sympathy. I'm interested. I got none. I'm interested now. Because you always do dumb shit. It's never like exciting. I remember when you went to Canada in 2016, you're like, oh my God, Jaby, you won't believe what happened. What? My shoe broke. That's right, it broke. Okay. Is that the end of the story? Yeah, disaster. I like that pair of KIRK, shoes. like, it broke. Did you lose a finger? Did you almost lose a finger? I almost lost an eyeball. With your shoe when it broke? That doesn't make any sense. With the mugs. Did you with take the mugs. you took that nasty of a fall when your shoe broke? No. So how'd you almost lose an eye when your shoe broke in Canada in 2016? With the mugs. Sense no makes With trick. the mugs. With the mugs. With the mugs. With the mugs. Do you understand? With the mugs. I had the mugs in my hand. They slipped out because, you know, that's what mugs do. And then it broke They and were then slippery. almost took my eye out. These like assassin ninja fucking mugs. That's what happened in the kitchen. I don't know where we're going with this. इसको पक्का करेंगे, इसका तो मैं पक्का करती हूँ। घटिया चीज। Oh. इसी पे बैठ भी जाती। Ashish and Tina. What a nice callback. किधर गया? क्या किधर गया? मेरा कैसल किधर गया? तूने कब कैसल बनाया? अरे जो भी पहाड़ तेरे को ही गिरा। नहीं
एक तो यहाँ गोवा आके रेत ऐसी ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ हाथ भी नहीं पहुँचते, पता भी नहीं निकालो कैसे उसको। पैरासेलिंग गौतमी ने नहीं की थी तो उसे यहाँ ले आया। ये इतना अच्छा है ना यार कि ये सिर्फ तू ही कर। बजट नहीं है लगता है तेरा। हाँ यार देख इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं तो मैं चाहता हूँ कि तू भी मजा ले। मैं तुझे देख के खुश हो जाऊंगा यार। एंजॉय। Very sus. Oh God. Oh, there's no one else. This is her. That's how you do it. खींच रहे स्लो हो गया एकदम। अब इसको मिलेगा सरप्राइज। Oh God. It's gonna shh. भाई एक सेकेंड। अरे बोट वहाँ है, मुझे अभी क्यों नीचे उतारे? फट रखी है इसकी। बस भैया बस। हाँ तो डूबने वाली थी ना। पता नहीं क्या हुआ, शायद वो लोग मुझे वापस ले रहे थे, थोड़ा पहले ले लिया और मैं पानी में चली गई थी। हाँ यार तू मर जाती ना, एक्सीडेंट हो गया। बहुत डर गई थी। वो एक्चुअली प्लान्ड था, डिप बोलते हैं उसको। मैंने 500 रुपए एक्स्ट्रा दे के वो ऐड कर। Oh my gosh, what a troll. पैसे भी नहीं दूंगी और उनको बोलूंगी कि अगर इसको 10 बार नहीं डुबाया ना तो इसको और भी पैसे नहीं दूंगी। ये जबरदस्ती करा रही है मेरे से, क्यों करना है ये सब? नीचे शार्क है, नीचे शार्क है। नहीं डुबाना मत मुझे, डुबाना। मैं कितना ऊपर ले जा रहा हूँ। Why? अरे नहीं देखना इतना व्यू। ओ भैया ऐसे अकड़ के डर के बैठा हूँ ना मैं सब। और डीप ले जाओ। हाँ वहाँ ले जाओ जहाँ शार्क वेल सब है। हाँ सब बांट के खाएंगे मुझे, 1/2 करेंगे मुझे। नहीं 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 नहीं, पानी 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 पानी। नहीं नहीं। Is that fun? Why did he tell her? Yeah. Oh no. Oh no. Oh no. ये मेरे मजे ले रहा है, मजे ले। चाय पत्ती की तरह डुबो रहे इसे। भैया और करो। Oh no. Being tossed. Retaliation came faster than karma. Oh my God. ये क्या? He was getting tossed. That was savage. I don't think it was that bad when. पे शार्क मुंह मार के गई है। What are they shooting with? I don't know. The camera's getting की soaked. जिंदगी झंडी होती है जो उसे खुल के रोने भी नहीं देती। कड़वा है मगर सच। I don't think so. Well, you might be right. फास्ट करना भैया, नहीं फास्ट। नहीं नहीं नहीं, ये खींच रहा हमें, ये लेके जा रहा Oh, that looks हमें, ये fun. फेंक देंगे हमें। अरे तू पकड़, तू नीचे मत। Strongly. बाय बाय। Holding onto the camera. क्या बोल रहे हो? कैमरा भी जाएगा मेरे साथ। Oh, he is. Okay, fair. वाटर भी दिखाएंगे आपको क्या होता है। ये चुप रहे भैया, भैया क्यों हिला डाला ना? गोवा को अलविदा बोलने वाला हूँ बीच में मूत के। मैं नहीं आ रही जा, ऑलरेडी पानी बहुत खारा है भाई, तेरे एडिशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ही मछलियों का नमकीन पिए क्या? उनको भी तो अपना पिलाएं। पानी ठंडा है यार। अभी गरम गरम फील होगा देख कुछ जब मैं बैठूंगा ना। I don't know. That's so relatable. I'll tell you the truth. So I went snorkeling with my family. There's no bathroom nearby. So you pooped in the water? No. Wow. So I was just like, hey guys, I'm gonna go for a tinkle. Go on ahead of me. Don't go behind me. Did the water turn like hardcore blue, like no, in Grown Ups? it's the ocean. It's the ocean. It doesn't do that. But like, I wasn't the only one that peed. Like, other people in my group peed too, but we announced it so as not to be rude. Just swim ahead. I'm doing a pee. Maybe the fish will come. Enjoy. You're saying you're announcing it, so that's the way to be polite. Yeah. And because it would be rude to just pee. And not tell anyone. What is the activity happening? Are you all just chilling or are you swimming? We're swimming. You're a terrible storyteller. I had no idea what the action was. I said we were snorkeling. We went on a snorkeling trip. We're out there swimming and, I needed to pee. I wasn't the first one to do this. Like, literally, my mom had done it earlier and my brother-in-law and other people. And that's when you found out you were a lesbian. Exactly. And then a dinosaur came in the room with a machine gun. Wow. I tell great stories, you guys. गोवा धक्के मार के हमें निकाल रहा है। चलो तो हम निकल ही गए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब फिर तुम
हम लोग को भी गोवा की परमिशन मिल जाएगी. Subscribe for permission. Also, don't forget to activate your virtual card now. Check out one card credit card. Link description में है. जिस काजू के लिए मेरा बीच मिस करवाया था, उस पे घर आते ही कीड़े लग गए. वाह, पैसे बर्बाद. Grody. मम्मी से डांट खा रही है. How'd that happen? Oh, that's so sad. That's so upsetting. She spent 2,000 rupees on those. And then they got bugs in them. I would be really upset. Gross. I'm supposed to make a comment about the video we just watched. Okay. I'm waiting for your comment. I just admire the fact that they use the footage that they have. Sometimes, because I'm watching this, I'm like, I would never put this together this way, is what I was thinking. Right. Because like, if I shot something and the camera was going, I wouldn't feel comfortable to use it. But that shows you how much I'm a boomer. Is that the word that the kids use? Sure, yeah. Because like, I don't feel comfortable to use footage that's crazy shaky like that, unless it's, generally speaking, I try to work around it or hide it or not use it at all. Well, and it's like, for them, it's just part of their storytelling. And I'm like, well, I admire that because they managed to tell a cohesive narrative with their thing and it's entertaining for people and that's cool. I wish that I was more relaxed with it with regards to the shots that I'm willing to use. That's the thing. It's like, it definitely, you like to go for like a more aesthetic feel because you come from more of like a filmmaking background. Whatever the videos are that we do, whether it's a reaction video or a vlog or a review or whatever, I'm always thinking, the question I ask myself is, how is this going to make the audience feel? Even though, you know, a substantial amount of people might just jet the moment the reaction's over instead of listening to the discussion, we still spend time on the discussion, whether it's like the cut, the music, the timing of it all, you know, there's effort put into that. I am concerned about how the audience is going to be impacted in terms of their experience with the video should they watch the rest of it. That's where I'm coming from. And so a shaky shot like that, it's like, for most people, they probably wouldn't care. But I get scared that my audience is going to be like, ugh, you know what I mean? And so I tend not to use stuff like that. I think it's cool that they're just like, whatever we got, we're going to make it work, you know? Well, because they're adding their commentary on top of it. Yeah. And it's funny and they cut it together in a way that is amusing. And they know their style and they know what they're doing and it works for them. And I think it's an important thing to remember as a vlogger, I suppose, that, I mean, it really depends on your type of content, right? They're not out there doing like the super aspirational, aesthetic travel vlog. They're selling SLAYY point, going on holiday, and lots of things go wrong. Yeah. And we enjoy watching that because it's funny. I feel like SLAYY Point's vlogs should be a different subcategory of vlogs because there's a comment right here that says these two people are proof that comedy can be added even to vlogs. And it's like, I don't look at this as like normal, straightforward vlog. No. Do you know what I mean? Like, because there's a lot of theater put into it. A lot of theatrics, a lot of jokes, a lot of kind of messing around. That moment when she kicks the castle and sits down and he comes over and pretends to pour the water on her, I asked myself questions while watching it going, okay, was that planned? Was this something they sort of talked about in advance before actually shooting it? Or was this, is the entire thing end-to-end improvised, you know? Yeah, I imagine it would be a mixture of both. And I imagine that when the camera is turned on, there's a certain level of like improv that's happening or like an agreement to play along and maybe act up for the cameras too, because it's fun. I don't know how many cameras they have, but you have your phones. Yes. And then you mentioned GoPro as a possibility, but they definitely had like a ZV-1 or one of those Sony cameras. Yeah. Because I could see it in the reflection, in the glasses, And I was like, okay, so let's assume that that's what you're using while you're walking around. You're probably trading who's holding the camera and then going, oh, I have an idea. And then you know what I mean? And so this is more than just a vlog. I don't know what you would call that, but it's put together in a different kind of way versus I'm going to go to, you know, the Taj Mahal and I'm literally just going to show you my experience with the Taj Mahal as opposed to an added on sketchy sort of vibe. You know what I mean? Sketchy in terms of like comedy sketch. Comedy sketch, yeah. Not sketchy as in like they're doing something suspect. Unless they're, you know, kicking the love names of people on the beach and creating drama. You can tell when it's real. Yeah. Like that's a moment where he realized he messed up. And like that looks real. There's a lot of stuff in here where it's very tongue-in-cheek and jokey, like deliberately so. While watching it, I kind of wish that they went the other direction with their vlogs, which is more just like them. You know what I mean? If that makes any sense. Because it feels like it goes so far into farcical that sometimes I lose sight of like my base level. You know what I mean? Because it's like constantly at a level 10 farce as opposed, and I lose my sense of reality. I suppose that like the vlogs are an extension of their videos, right? It's very much their personalities from their regular videos, but just
transported, whatever, onto a vlog. Maybe it would be interesting to kind of actually see them in the real. Do you know what I mean? Like just being themselves and not the characters that they portray for Slay Point. Well, just to be clear about what I'm talking about, when you have like in improv class, right? When I took UCB improv, one of the things that you start with always is some kind of a setup, a situation. So someone comes on stage and sets up the scenario. Yeah. And then you have your straight man and your weirdo, your what do you call that person? The strange person? Sure. I forgot what they're called. I don't know. That's the dynamic, is one person is normal, one person is weird. That's the dynamic oftentimes. But the thing is, you still have a baseline of what is the situation. We're at Starbucks, and like this is the circumstance that we're working with. And then absurdity proceeds. Yes. Right? And so often, like with this, there was no baseline. It was just absurd. The whole way through. The whole, you know what I mean? Oh, I guess the baseline, you could argue that the baseline is we're in Goa. It was fun, don't get me wrong. Like, I enjoyed it. I liked it a lot, Yeah, yeah. I enjoyed it. I had fun with it. I do wish that they had like I guess it wouldn't be convenient, like a thing to make it steady. A gimbal or something? Yeah, a gimbal. Like, I wish they had a gimbal of some kind. So I know that if I were ever to do a vlog and Jaby was there, it would be beautiful. But if I'm vlogging myself, It's crap. I'm not gonna lie, I'm lazy AF. I don't even want to carry more than like my cell phone. Do you know what I mean? Like, Yeah. I just need it to be simple. And I feel like in some regards, when you're vlogging like that, to be able to get those little moments, it's easier when you're just carrying your mobile phone because it's not as intrusive. If you just use the mobile phone, then you're more likely to get that shot when Jaby meets a Jay Devgan. I knew it was gonna come back to And you this. God won't damn miss it. it.